Okay, let's talk about simple quadratic graphs. So 2x square अगर मेरे पास है, so that means the turning point is 0, 0 because there is nothing in this here and this. It's just simple 2x square. Y is equals to minus 3x square will look like this. Okay, y is equals to 3x square plus 6. There is no x term. That means अगर मैं इसको completing square में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0, 6 is my turning point. That or otherwise I can say that it is plus 6 units shifted above. Meaning this is starting from 6. 3x square plus 6. Similarly, y is equals to minus x square minus 2. Plus 2 चलो. उल्टा होगा लेकिन plus 2 से ऊपर shift हुआ होगा. So these graphs can be drawn directly without anything. ठीक है? अच्छा, now let's move on to the cubic graphs. Y is equals to if you talk about a basic cubic graph, ठीक है, and if it's y is equals to minus x cube, this is how it looks like, passing through the origin. अब इसकी वेरिएशन पे आते हैं. Y is equals to x minus 2, x plus 3, x plus 5. First find out the x-intercepts. How do we find out the x-intercepts? We put y is equals to 0. X minus 2 equals to 0, x equals to 2. Now plug it in. Minus 3, minus 5 and 2. Acha, when you multiply the x, you get an x cube, meaning the shape will be look like this. Okay. Now how do we find out the y-intercept? 0, y. Put the value of x as 0. ठीक है? Okay, now let's move on another one. So basically this means this is a repeated root. Repeated root means ये 2 दफ़ा आ रहा होगा तभी इसको square करके लिखती है. The graph will be tangent at this point. Meaning, let's draw it. मैंने directly y-intercepts, x-intercepts निकालनी है. Did not do the working here. Since again x square into x is x cube positive, so the graph will look like this. Meaning, थोड़ा सा गलत बना है, मेरा हाथ स्लिप कर गया. So now what is the y-intercept? 0 minus 3 whole square. This is 36, right? Let's do another example. Now let's put y is equals to 0. No, I'm changing the equation. Now 3 minus x, x minus 2, x plus 1. The value of x will be minus 1, 2 and 3. 3. Now when we multiply minus x into x, minus x square minus x cube, meaning the graph will look like this.
So this is minus 1, 2 and 3. Now y-intercept, 3 into minus 2 into 1, minus 6. ठीक है? Simple graphs like y is equals to 4x cube plus 1. There is no other thing, so it is going to be very direct. The graph will just pass through plus 1. Y is equals to minus x cube minus 5. It will be this shape and will cut through minus 5. Okay? So these are simple cubic which can be directly sketched. Now the next thing is reciprocal graphs. For the reciprocal graphs, these are my generic forms. ठीक है? And if the y is equals to c, x equals to b are my asymptotes. ठीक है? If a is greater than 0, that means it's a positive value. This is how the graph will look like. If a is less than 0, this is how it will look like. Now let's do different examples. अब यहाँ पे ये प्लस 0 है, ये माइनस 0 है. That means y is equals to 0, x equals to 0. If I talk about y is equals to 0, it is this line and x equals to 0 is this line. So my graph is going to be asymptotic to these two lines. This was simple. Let's take another example. Y is equals to 2 upon x plus 2 plus 3. So y is equals to 3 and x equals to minus 2 because there should be a minus here. Now y is equals to 3 is y is equals to 3 is this line and x equals to minus 2 is this line. 3 and minus 2. A positive means parallel जाएगी. Now this has x-intercept and y-intercept both. Let's find those values out. 2 upon 0 plus 2 plus 3. 1 plus 3 is 4. This also has a y-intercept. So this value is, ठीक है? This is my graph. Let's do another example. अब यहाँ पे ये 2 लगा हुआ है. सबसे पहले तो ये 2 कॉमन बाहर आएगा. माइनस साइन आप न्यूमरेटर के साथ लगा सकते हैं. देयर इज अ प्लस 0 हियर. Okay, let's draw the graph. Okay, minus half means and y is equals to 0 means minus 5 upon 2 means now when is x there, we just have a y-intercept, meaning when you input 0 in place of x, we get a minus 5.
ठीक है, अच्छा जी इधर आ जाते हैं. वाई देयर इज वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन लेफ्ट विच इज y is equals to 2 की power x. How do we do that? A positive power means this is the asymptote. ठीक है, and when you put x की value 0, it is 1. This is how the graph will go. Now y is equals to 3 power minus x. Again, this is the asymptote. And a minus indicates that this is going to be like this, where this will be 1. ठीक है. Now let's talk about a couple of questions. State which figures could be the graphs of cubic graph is looks like this. और +1 का मतलब ये है कि ये इंटरसेप्ट है, so it means A is figure F. x square minus 3, पॉजिटिव x square means happy face, और happy face जो है वो 3 units down जाएगा because this is -3. B is figure C. C is 3 power x, power is positive, the graph will look like this, figure B. D, x minus 3 the whole square. Okay, this is the type of quadratic function which I did not discuss. Meaning x equals to 3, और मैंने बोलता जहाँ पे स्क्वायर ओवरऑल आ जाए दैट मीन्स ये टेंजेंसी आकर हो जाती है उसके ऊपर, यानी कि 3 को ही सिर्फ टच करेगा. दिस इज द फिगर. ठीक है, आई होप इट्स ऑल क्लियर. These were relatively easy questions. Let's do more. Okay. On the diagram, sketch the graph of y is equals to x minus 1 whole square. Okay, x minus 1 में जब मैं y 0 रखती हूँ तो x equals to value 1 आती है सिर्फ, और जब a की इंटरसेप्ट हो, so it means it is tangent to the graph. ठीक है, why is it? Because यहाँ पे 1 है, so it's a happy face. Now how do you draw a line? You suppose the values of x. When x is 0, तो हमने यहाँ 0 डाला तो वैल्यू ऑफ y क्या आ गई 1, यानी कि ये यहाँ पर कुछ होगा. तो बेसिकली इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, और सिंस उन्होंने मुझे स्केच करने को बोला है, सो आई कैन ड्रॉ रफ स्केच विदाउट फाइंडिंग आउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट्स. दिस इज हाउ माई लाइन विल लुक लाइक. ठीक है. नाउ they are intersecting at A and B, find the length of AB. अच्छा, अब ये सवाल तो simultaneous equation का, I don't think so they should be coming. तो x square minus 2x plus 1 equals to half x plus 1. Then you solve the quadratic equation. Solve the quadratic equation. x की 2 values आएंगी, x की values यहाँ रख के आप y की values निकाल लीजिएगा, और distance formula से फिर आप distance निकाल लीजिएगा. This is a coordinate geometry question. Now x cube plus 2, cubic graph है, positive है, plus 2 से कट करेगा. This is negative cube and this is positive cube. So A will become F. B, reciprocal graph है with 0 0, so A. 2 minus x square plus 2 means it's a sad face. Sad face में plus 2 intercept में आ रहा है. Question number 4A, 1 minus 2x. Minus 2 gradient means it's a downward sloping line, so it's clearly graph A.
लेकिन नहीं नहीं नहीं, ग्राफ ए और सी में टाई है. दिस इज़ अ नेगेटिव इंटरसेप्ट and this is a positive intercept, and we have +1 is a positive intercept. That's why we will select graph A. 1 upon x is again 1 to this side, another 1 to this side. This is graph F. X cube plus 1, positive x cube cutting through +1. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका सवाल शायद नीचे रह गया. Which of the graphs below could be the graph of x cube? x cube 1 upon x square. ये भी ग्राफ नहीं पता है, ये बता देती हूँ. x minus 1 नेगेटिव इंटरसेप्ट है एंड पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है. फिगर 2. दिस इज b एंड दिस इज a. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी कि प्लस पॉजिटिव है और मिनिमम ग्राफ है. फिगर 1. अगेन दिस इज इंटरसेप्ट इज 2 and -1 यानी कि 2 and -1. दिस कैन नॉट बी 2 - 1 क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा है और ये डिस्टेंस छोटा है. दिस इज अ नेगेटिव, सो इट मीन्स इट्स अ सैड फेस. द ओनली सैड फेस दैट वी हैव इज इन फिगर 1. सो इसका मतलब है ये सी है. और ए क्या हमारे पास होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज अ हैप्पी फेस प्लस 2. दिस इज ए. डज इट मेक सेंस? ठीक है. अच्छा जी, अब मैंने आपसे कहा था कि एक चीज़ मैंने आपको नहीं सिखाई. येस, दैट वाज y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ये सेम चीज़ होती है. a अपॉन x माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस c इज़ द फॉर्मैट. इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, दिस इज़ हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक. इफ़ a इज़ लेस देन 0, दिस इज़ हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक. ठीक है, ये भी एसिम्प्टोट ही होता है, ऐसे ही होता है. And y is equals to c, x equals to b are my asymptotes. ठीक है. So if y is equals to 2 upon x minus 2 whole square, that means y is equals to 0, यहाँ प्लस 0 है, and x equals to 2, the graph will look like y-intercept will exist. 2 upon 4 is half. ठीक है. And y is equals to -3 upon x square plus 2. Meaning, if I have to sketch this one, y is equals to 2 and x equals to 0. A negative means this is where it will cut. दो x intercepts exist कर रहे हैं. एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ. सिंस आई डोंट हैव द कैलकुलेटर, दैट्स आई एम जस्ट पुटिंग इन द एग्जैक्ट वैल्यू.